नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। आशा है आप सभी लोग अच्छी तरह होंगे और लोकसभा इलेक्शन 24 का रिजल्ट देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ पीएनबी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन ने एक पत्र अपने एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक कॉर्पोरेट ऑफिस को लिखा 3/6 को रिगार्डिंग रिस्टोरेशन ऑफ द कम्यूटेड अमाउंट ऑफ pension after 10 years instead of 15 years. Honorable Punjab and Haryana High Court on 31st May 24 state recovery after 10 years in some cases of the retired employees of Union Bank of India. आपको पता है कि जब हम कम्यूटेशन लेते हैं तो उसकी रिकवरी बैंक करती है और उसका जो टेन्योर है वो 15 ईयर्स का है। और इस संबंध में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने डिसीजन 31 मई को दिया। हालांकि इस संबंध में गुजरात गवर्नमेंट ऑलरेडी 15 इयर्स का स्पान घटा के 13 इयर्स कर दिया था। जन सामान्यता यह कहना है कि हम जो रिकवरी करते हैं वो 15 साल ज्यादा है। इस बारे में कह सकते हैं कि जो लेटर लंबा है तो उसके इंपॉर्टेंट लिस्ट में बताता हूं। व्हाट राइट justification has the bank's government got to overcharge the pensioner and recover even a penny more than what it has paid, as is evident from the following presentation. The main reason projected by the government for excess recovery is the mortality risk factor, as the balance recovery is waived in case of death. The hard fact remains that commuted pension is like any other advance loan or on which the banks charge interest at the rate of 4.75% annum. Banks are continuously recovering commuted amount of for 15 years, though it recovers the full amount with interest in 9 years and 10 months. यानी कि 9 साल 10 महीने के अंदर पूरा अमाउंट रिकवर हो जाता है, फिर भी 15 साल तक इसकी रिकवरी की जाती है। In this connection, following extract of Honorable SC judgment dated 9 December 86, Common Cause versus Union of India in writ petition number 39586/261 of 1983 under Article 32 of the Constitution of India is relevant. In dealing with a matter of this nature, it is not appropriate to be guided by the example of life insurance. Equally unjust it would be to adopt the interest basis. On the other hand, the conclusion should be evolved by the relating it to the years of purchase basis and addition of 2 years to the period necessary for the recovery on the basis of years of purchase. This judgment has 3 interfaces. First, no link of the concept of commutation can be made to life insurance. This demolishes the official stand that an element of the insurance /risk is made into the concept of commutation. B, the period of recovery for interest cannot exceed 2 years after the recovery of the principal amount on the basis of year of purchase. C, a perusal of the judgment shows that 15 years is the upper limit, while there is no lower threshold fixed. No bar has been placed by the court on its reduction, which can always be done in view of the changed circumstances like higher life expectancy, lower risk factor, revised commutation table, reduced commutation factor, increased interest rate, high age of the retirement, and the change scenario after the 4th, 5th, and 6th Central Pay Commission. The justification given by the government for excess recovery is the twofold. First, convenience of lump sum payment to the pensioner, and second, mortality risk factor. Our comments on justification given by the government for excess recovery is first, convenience of the lump sum payment to pensioners
year age, although retired in 2000. The state government of Gujarat has already restored the commuted value of pension after 13 years. On 31st May 2024, Honorable High Court of Punjab and Haryana, in case of Chandra Mohan Tandon and others versus Union of India, another has stayed further recovery, stating as under. While we have passed the said interim order in several cases, restraining the respondents from making any recovery, it is clarified that the same would be a direction in case where the concerned petitioner has completed 10 years of the retirement or above. In view of above calculations, Supreme Court observations, High Court orders, we request you to kindly review earlier decision and restore full amount of pension after 10 years. Thank you. हमारे पंजाब नेशनल बैंक के कोऑर्डिनेटर कमेटी पेंशनर्स की है, उन्होंने डिमांड किया है कि जो कम्यूटेशन पीरियड 15 इयर्स का है इसको रिड्यूस करके 10 इयर्स दिए। इसके बारे में उन्होंने अपना जस्टिफिकेशन, जैसा कि 31/5/24 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने दिया है, उसको उन्होंने नजीर बनाया है और ये भी बताया है कि इस संबंध में गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने 15 ईयर से घटा के इस पीरियड को 13 ईयर्स कर दिया है, जबकि पूरी रिकवरी 9 साल 10 महीने में हो जा रही है, प्लस 2 ईयर्स अगर मान के चलें तो मैक्सिमम इट विल बी द 11 ईयर्स 9 मंथ यानी 12 मंथ्स। हम समझते हैं कि 15 ईयर्स जो है बहुत ज़्यादा है, जो कि पेंशनर के लिए अननेसेसरी का एक बर्डन है जो इलीगल भी है। सो क्यों नहीं इसको 10 ईयर्स के लिए बैंक डिमांड कर रही है बैंक से, ये हमारी यूनियन। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।